Hello friends, welcome to Stock Market Pulse. I'm Nitika. Let's check the pulse of the stock market. But before that, let me wish you all a very happy Independence Day. So, as I promised, I have come up with the strong stock which has posted a very good Q1 results, and I will discuss the related important news also, fundamental, and the buying level also for the long term. So, to know the buying level for the long term for the stock, stay connected till the end and smash the like button now. Subscribe the channel for regular update of these kind of stock. So let's begin with the name of the stock, and after that I will discuss the important news, Q1 results, and buying level. So this stock is from FMCG sector, and this is the top stock of the FMCG sector, and the name is ITC. So ITC को किसी पहचान की जरूरत नहीं है. It is itself a well established company of the India. तो आईटीसी में सबसे पहले आई विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट रिलेटेड न्यूज, देन आई विल गो टू द रिजल्ट्स एनालिसिस. सो आईटीसी का जो इम्पॉर्टेंट न्यूज है, द बोर्ड ऑफ आईटीसी on August 14, yeah, means yesterday only, has approved the demerger of the hotel business. ये बहुत पहले न्यूज आ चुकी थी कि डिमर्जर होगा, बट अभी ऑन 14 अगस्त ऑन द रिजल्ट डे दे हैव अप्रूव्ड इट कि ये डिमर्जर हो जाएगा, होटल कंपनी अलग हो जाएगी, होटल बिजनेस अलग हो जाएगा, और बाकी के जो इनके सेगमेंट्स हैं वो अलग होंगे, जिसमें से इंपॉर्टेंट सेगमेंट सिगरेट का है, जो आई विल डिस्कस लेटर. सो ये हुआ, एंड द coming listing of new entry is about 15th month from this month. इट्स कमिंग 15 मंथ में ये कंपनी का डिमर्जर प्रोसेस खत्म होगा और लिस्ट होगी. इट विल लिस्ट इन द stock market 15 month. So the hotel business will have the license to use the ITC brand and name. तो वो होटल बिजनेस इनका ब्रांड और नेम दोनों यूज करेगा, बट कंपनी अलग होगी. जैसे अभी डिमर्जर रिलायंस का हुआ था, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो उसी तरह सेम थिंग इज हैपनिंग इन आईटीसी आल्सो. And the under the demerger, shareholder will get one share of hotel business for every 10 share of ITC. Means I will explain it nicely, that if you are having you are a ITC shareholder, say if you have 20 share of ITC stock, so you will get two hotel कंपनी स्टॉक. होटल बिजनेस का आपको दो स्टॉक मिलेगा. मीन्स इफ यू आर हैविंग 20 शेयर ऑफ आईटीसी स्टॉक, यू विल गेट 2 शेयर ऑफ इंडियन होटल स्टॉक. मीन्स ये 1:10 का रेशियो में वो स्टॉक आपको मिलेगा. दिस इज द प्रॉपर डीमर्जर प्रोसेस. 15 मंथ में कंप्लीट होगा, 15 मंथ में लिस्ट होगी कंपनी. सो Q1 result was also very good. I'm discussing it Y on Y. सो लास्ट ईयर 23 के से अगर हम कंपेयर करें Q1 23, सो दिस ईयर इन Q1 24 the profit has come 4,902.7, which was in last year 4,169. So overall 17.6% jump. It is good jump. Now we'll come to the revenue. If we come into revenue is little bit down, means very less, means 8.5%, about around 8.5% down. It has come 15,828.2 crore, which was last year 17,289.7 crore. तो थोड़ा सा स्लाइटली रेवेन्यू जरूर कम हुआ है, बट वाई ऑन वाई. और अगर एबिटा देखें तो एबिटा हैज कम 6,250
crore in this quarter 2024, which was in last quarter 2023 it was 5647.5 crore. So overall 10.7% jump in EBITDA. Okay, now important thing is margin. So if we check the margin has come 39.5%, which was in last Q1 2023 32.7%. Means margin has means very good jump. It has become 39.5% from the 32.7%. It's overall 680 bps jump. It's very good jump in margin. And margin, I always say, it is very very important thing for the company, which shows growth of the company. ITC has reported a very good earnings. So we have discussed the very important news of demerger. We have discussed the Q1 result. Now we'll come to the uh, fundamental of the company. तो अगर वी सी द फंडामेंटल हाउ इज डूइंग, तो आईटीसी को एज आई पहले भी एज आई अर्लियर सेड, आईटीसी डज नॉट नीड एनी रिकॉग्निशन. इट इज अ वेरी वेल established company in India. So, and it is large cap. It is from the FMCG sector. If we say FMCG sector का बहुत ही टॉप स्टॉक है. If we come to the comparison with peers, so we can see ITC is trading at 450 around. Actually 450 around is trading, जो कि अभी 6 महीने से ITC has run up very very nicely. और नाउ इट हैज़ कम, जो कि कभी 250 से ऊपर नहीं जाता था. वो 5-6 महीनों में अच्छा खासा रन अप कर गया है, जिसकी वजह से 450 पे ट्रेड कर रहा है. ट्रेडिंग प्राइस इज 450. और नाउ पीई, जो कि मैं बोल रही हूँ कि पिछले 6 महीने से काफ़ी रन अप कर गया है, इस वजह से आईटीसी का पीई 28.2 हो गया है, जो कि लुकिंग लिटिल बिट ओवर वैल्यूड इन करंट सिनारियो. बिकॉज पहले ये बहुत ही स्लो चलता था, स्लो अभी भी चलता है, बट पहले इसमें ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता था. एक ये मीम स्टॉक बना बना हुआ था काफ़ी लोगों के लिए, बट जब इसने भागना शुरू किया है तो फिर इट इज़ नॉट एक्चुअली गेटिंग स्टॉप. तो अभी इसका पी थोड़ा इन 6 महीनों के बीच में पी बढ़ गया है. तो पी हैज़ बिकम 28.2, विच आई एम फीलिंग इट इज़ overvalued, little bit overvalued, but still this kind of stock you can buy on this PE also. As per my view, you can decide your views. Market cap, as I said, it is large cap. The market cap is 5,59,920 around. इतना बड़ा मार्केट कैप इस कंपनी ने कैप्चर किया हुआ है. सो now we come to the dividend yield. Dividend, company is paying very very good dividend. As everybody knows कि ITC always give a very very good dividend. The shareholder of ITC always getting paid with the dividend, so they keep holding these stocks. So this stock, they keep holding this stock even for dividend also. They are earning the good amount of money. So dividend yield is 2.84%, which is very, very good. Profit growth, profit variable also is 16.29, is also very good. अगर ROC check करें तो ROC is means 39.23%. As I always say, 39% is actually very rare, very very good for the stock. Debt to equity is 000, fully debt free. कंपनी इज फुल्ली डेट फ्री. कोई भी डेट इस कंपनी पे नहीं रहता है. ROE 29%, around 29%. Again, it is a beautiful ROE. EPS 16. एंड कोई भी प्लेज शेयर कंपनी पे नहीं है. जो ये एक दो चीज़ है, प्लेज शेयर एंड डेट टू इक्विटी, बोथ आर 0, 0, 0, 0.
जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंपनी के लिए। फ्री कैश फ्लो इज ऑल्सो वेरी गुड, 16,183 करोड़, जो कि कंपनी की अच्छी हेल्दी रिपोर्ट देता है। I have done the fundamental analysis, or it is actually showing very good growth also. So fundamentally company is very very strong. I have kept the fact, you can go through in detail. Now we have come to the chart to see कि where we should buy this stock for long term, क्योंकि you cannot buy any time या किसी भी समय पे you cannot buy the stock. We have to always check the technical chart कि कब हमें इसमें enter करना चाहिए, कब हमें निकल जाना चाहिए. So I will see the chart, I will check the chart where you can buy and accumulate this stock for long term. I'm talking only for long term. So if we come to the chart, we can see it is last actually from July, करीब एक महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, फ्रॉम जुलाई या फिर यस जुलाई से ही इट हैज़ टच द अराउंड 500 के आसपास टच किया, एंड फ्रॉम देयर इट हैज़ स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, एंड इट हैज़ कम हियर द बिग कैंडल एंड कमिंग 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 कमिंग, काफ़ी दिनों से ये गिरता जा रहा है, इट इज़ फॉलिंग. बट अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो काफ़ी दिनों से ये अप ट्रेंड में भी है. इट इज़ ऑन अप ट्रेंड एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुली it is trading above than 20 EMA. This is the 20 EMA green line. So it is very beautifully trading above the 20 EMA. It has not broken support till here, but from here हियर इज दिस कैंडल 470 के बाद से इसने ये 20 EMA को तोड़ दिया, एंड वहाँ से भी इसने अब उसके बाद उसने 50 EMA को भी, इट हैज़ ऑल्सो ब्रोकन द 50 EMA ऑल line, and then now again it is looking like it is going down again. So abhi I will say it is on very good buying levels zone for the long term, because अच्छा खासा ये स्टॉक गिर चुका है 500 से 400 के आसपास, 450 के आसपास, मतलब इस स्टॉक के लिए बहुत अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है. सो you can as I see the level, it can come till here 440 also, और अगर 440 को भी तोड़ देता है तो 400 से 420 के आसपास तो बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल है फॉर दिस स्टॉक. बट 420 आएगा कि नहीं आएगा, दैट आई कैन नॉट से, दैट मार्केट विल शो अप. सो let's see what happens, but अभी के लिए 440 is a very very good buying level. You can, in a small chunk, you can start accumulating here. If it goes on, you can add it more. So इस लेवल पे खरीदना शुरू कर सकते हैं 400 से 440 के बीच में. मैं आई विल से द if I'll see the buying zone can be 400 to 440 का लेवल हो सकता है फॉर द आईटीसी. और टारगेट देखें तो एक रेजिस्टेंस ये हमें यहाँ पे फेस कर चुका है 2 बार. सो 500 पे अगेन इट विल टेक सम रेजिस्टेंस डेफिनेटली, बट अगर ये 500 तोड़ देगा तो 500 तोड़ने के बाद फिर और भी तेज़ी से ये भागने वाला है. सो बेटर यू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इट. सो अभी के लिए तो मैं 500 का ही टारगेट देख रही हूँ आफ्टर ब्रेकिंग. Anyways, you have to hold because you are buying for long term. So after that 500, it will go up and up. After analysis of the technical chart, I can say the buying level for ITC for long term can be 420 around to 440, 440 for the target of 500, even 500 plus. So this was overall whole analysis of the ITC stock, and I will come up again with these kind of thorough analysis of the stock to know
the buying level for the M&M, click the right button, and to know the buying level of the VBL, click the left button. Signing off.